Good evening. Good evening, everyone. So, we are doing research methods. We are trying to understand how research is being conducted. Although हम ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं, इतना क्वेश्चन नहीं आता है. वाह, दैट्स गुड. इट लुक्स वेरी गुड. तुमने बनाया? संभाल के रखो. इतना हार्डवर्क. फोटो खींच लिया इसका? स्कैन करा लिया? वंडरफुल. मतलब फोटो खींच लिया ना अच्छे से? नहीं नहीं, किसी को मत भेजना. शाबाश, बहुत बढ़िया. व्हाट्स योर गुड नेम? विपुल. वेरी नाइस. ऐसा ही मैं कह रहा था. वेरी गुड. अब एक काम करो, जहाँ जहाँ पे सब स्कूल्स हैं उनको अलग से बना के रख लो. जिसका सब स्कूल हमने मिस किया है. लाइक डिफ्यूजनिज्म में वी हैव 3 सब स्कूल्स, राइट. स्कॉलर वाइज भी बना के रख लो. सिमिलरली स्कॉलर वाइज. ठीक है. जैसे हम मॉर्गन पे एक बना लें, है ना. सो वेरी नाइस. जो स्मार्ट वर्क करने वाले, स्मार्ट बोर्ड पे काम करने वाले, वो इतना फायदा नहीं उठा पाएंगे बिकॉज इट रिक्वायर प्लानिंग ऑफ द स्पेस. मैंने एक्चुअली अपने प्रिपरेशन डेज में कोशिश किया था. इट्स वेरी टफ. ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं होता ना कितना स्पेस किस में देना है, एंड यू वेस्ट मल्टीपल पेपर्स इन दैट रिगार्ड. सो आप प्लानिंग करना सीखते हो, जो कि नॉर्मली आप नहीं सीख पाते हो. सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पेपर पे ही सीखी जाती हैं, है ना. ओके, सो वी आर डूइंग एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च. And we missed on one topic, fieldwork tradition. Okay, so here we are going to talk about the basic thing, like how this fieldwork tradition in anthropology have developed, or you may say evolved, right. So earliest field worker that we consider was Lewis Henry Morgan, who did field work on Iroquois Indians. Although his field work was not a typical field work, after L.H. Morgan, see, parallel to Morgan there was our scholar that we say Tyler. बट टाइलर ने कहीं फील्ड वर्क नहीं किया था. हाँ, वो केव्स वगैरह घूम के आया, बट प्रॉपर वाला फील्ड वर्क नहीं था. ठीक है. द मेन स्कॉलर, इवन मॉर्गन वाज नॉट अ फील्ड वर्कर. मॉर्गन भी प्रॉपर फील्ड वर्कर नहीं था. असली फील्ड वर्कर स्टार्ट अगर थोड़ा सा भी देखें तो वी हैव फ्रांस बोवास. फ्रांस बोवास studied Eskimos, and what was the product of this field work? The genesis of the concept of cultural relativism. So cultural relativism is an essential part of field work. ठीक है. You cannot judge the culture that you are studying. You have to be as objective as you can, right? After Franz Boas' work on Eskimo, he basically directed and participated in Jessup
Pacific, North Pacific expedition. So what they identified through this fieldwork? The cultural similarities which state is that? टोरस स्टेट थोड़ी ना ऊपर यार, बैरिंग स्टेट्स, राइट। बैरिंग स्टेट के दोनों साइड में, जो एक साइड में आपके अलास्का है और एक साइड में साइबेरिया है, राइट। सो right, you can say one side we have Alaska, so here diffusion, historical particularism. Then we have Torres Strait expedition, Torres Strait expedition, right. Here some scholars like Seligman, Charles Seligman, then W.H.R. Rivers, Haddon, etc. participated. It was a interdisciplinary research project. In which various dimensions of the social and cultural life of the inhabitants of the islands islands near the Torres Strait was studied, right. Various aspects, their society, their culture, their language, their behavior, etc. was studied by the team of researchers, right. Rivers later on studied Todas of Nilgiri, okay. Now till now whatever is happening, this is not a proper field work through participant observation, right. This was not ethnographic field work. It was not through participant observation. Okay. The transition towards better, more effective, more sophisticated fieldwork started with, see, chronologically work of R.C. Brown is before Malinowski, right, chronologically, but ब्राउन को मेलिनोस्की के अंदर रखा जाता है क्योंकि मेलिनोस्की का ज़्यादा इफेक्टिव फील्ड वर्क था, राइट. सो ब्राउन क्रोनोलॉजिकली पहले आते हैं,
1906 के अप्रोक्स में उन्होंने फील्ड वर्क कर लिया था, ऑलमोस्ट इन द सेम टाइम व्हेन रिवर्स वाज डूइंग. रिवर्स का स्टूडेंट था ब्राउन, राइट. सो ब्राउन स्टडीड ऑन्जीज. ओके, बट ब्राउन ने भी लैंग्वेज मास्टर नहीं किया था. ब्राउन ने भी लैंग्वेज मास्टर नहीं किया था और लंबा समय तक रुके भी नहीं थे ब्राउन, राइट. सो ब्राउन का फील्ड वर्क मैलिनोस्की के बराबर नहीं है, बट हाँ बेटर था पहले वालों से. देन आफ्टर दैट कम्स द मेन स्कॉलर हु इज द फादर ऑफ फील्ड वर्क. Malinowski is the father of fieldwork tradition. Through participant observation in anthropology. He studied Trobriand Islanders from 1914 to 1918. अप्रोक्सीमेटली 2 years के अप्रोक्स का फील्ड वर्क बनता है इनका, बीच बीच में आते जाते रहे थे. सो ही स्टडीड ट्रोब्रिएंट आइलैंडर्स, राइट, थ्रू फील्ड वर्क. And this field work is considered as the most authentic field work. Why it is considered as most authentic field work? Because prolonged stay, with natives, right. Next, data collection in native tongue, data collection in native tongue, participant observation, right, and attention to detail. Attention to detail. हर एक डिटेल को अटेंशन दिया इन्होंने इस वर्क के थ्रू. इज इट क्लियर? एंड आफ्टर Malinowski's work, field work became essential for anthropology. ये Malinowski के बाद शुरू हुआ, right? And the Malinowski's fieldwork tradition is also known as Malinowskian tradition. So if somebody will ask you to write a note on fieldwork tradition in anthropology, you can simply say that we can understand it through Malinowski's fieldwork tradition. So fieldwork before Malinowskian tradition and Malinowskian tradition. ठीक है? There are two divides. One is fieldwork before Malinowski and fieldwork through Malinowski's tradition. ठीक है?
The development of fieldwork tradition can be seen in two phases. One is fieldwork before Malinowski and Malinowskian tradition. ठीक है, Malinowskian tradition can be seen through the works of Boasian disciples. बोआस के स्टूडेंट्स भी Malinowskian ट्रेडिशन फॉलो करेंगे और Malinowski के स्टूडेंट्स भी, राइट. सो आफ्टर Malinowski, who followed this tradition, you can say Ruth Benedict, studied Juni, right, Kochiti, you may say Margaret Mead, Samoa, Manus, etc. You may talk about these scholars like Hortense Powdermaker, she was a student of Malinowski in Melanesia. You can talk about the students or other students of Malinowski, say Audrey Richards, who studied Bemba, जाम्बिया. इनकी बुक का नाम है चिसुंगू. राइट, चिसुंगू में इन्होंने प्यूबर्टी रिचुअल ऑफ गर्ल्स का, चिसिंगा नहीं है, चिसुंगू, देयर इज अ डिफरेंस. दोनों साथ साथ की ट्राइब है ना, बेम्बा एंड देम्बू पास पास में ही है. ओके, ऑड्री रिचर्ड्स का स्टडी है ये चिसुंगू का. देन यस, योर इवांस पिचार्ड, मेलानेशिया की ट्राइब्स पे. He studied Newer, Ajande, Dinka of Sudan, right. Then Mayor Fortis, studied Talensi of Ghana. Right. Then you may say the scholars like Raymond Firth, the student of Malinowski. He studied Tiv of New Guinea. Right. Then you may talk about other scholars like Edmund Leach, who studied Kachin. Then yes, Ralph Linton, Mark Wesa, you may talk about other scholars. बहुत सारा हो सकता है, right? We can talk about Indian field workers, जैसे हमने कल बात भी किया था, राइट. एलपी विद्यार्थी का मलेर का स्टडी है, ठीक है. से दुबे का कमार का स्टडी है, राइट. वी कैन टॉक अबाउट मजूमदार स्टडी ऑन हो. वी कैन टॉक अबाउट मुंडाज स्टडी बाय एस.सी. रॉय, ओराउन स्टडी बाय एस.सी. रॉय. बहुत सारी स्टडीज है इंडियन स्कॉलर्स ने भी. लाइक यू कैन टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ this scholar like M.N. Srinivas on the village. M.N. Srinivas का साउथ इंडियन विलेजेस पे स्टडी है
है ना, रामपुरा विलेज पे डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट निकाल के लाए हैं, राइट. सो देर आर मेनी स्टडीज दैट हैज बीन डन बाय वेरियस स्कॉलर्स इन इंडिया एज वेल. सो दिस इज हाउ वी कैन से देयर इज अ development of fieldwork tradition in anthropology, which can be broadly categorized into two: fieldwork before Malinowski and Malinowskian fieldwork tradition. See, Malinowski brought in empiricism in research. Empiricism is brought about by two broad factors. What are they? Number one, fact collection, right? Fact के ऊपर बात हो रहा है अभी. Second important point, not just fact, objectivity. That means without bias. How come objectivity? Through the application of the concept of cultural relativism. That means we are not judging the people we are studying. We are not ethnocentric in our approach. That is what this concept of, you can say, cultural relativism preaches. ठीक है, यही कहता है cultural relativism. Clear? आई बिलीव काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा. हाँ, बहुत सारे स्टडी किया था उन्होंने. न्यूअर पे स्टडी किया था, सॉरी, ओके, फोर्टिस ने ना, हाँ, फोर्टिस ने टैलेंसी ऑफ घाना पे किया था. बिल्कुल, टैलेंसी, TALLENSI, टैलेंसी ऑफ घाना. One or more tribe I told you during the discussions, वो ट्राइब मेरे दिमाग से अभी निकल चुकी है. You know, it is not coming back. कभी कभार होता है कि एक नाम निकल गया. Do you remember that matrilineal descent हमने स्टडी किया था जब हम बात कर रहे थे डबल डिसेंट का? तो आई गिव यू टू एग्जांपल्स, याको ऑफ नाइजीरिया एंड देयर इज अनदर वन. याको के साथ में व्हाट वाज द नेम? इट इज़ नॉट कमिंग इन माई माइंड. सो कोई बात नहीं, बाद में आएगा तो आई विल बी टेलिंग यू. दैट्स ऑल राइट. एक ट्राइब बता दिया हमने, हमारी चॉइस है ना, हम कितना बताना चाह रहे हैं. मेंस में यही तो अच्छी बात है, यू कैन हाइड. हाँ, नेवर एवर डू दिस थिंग कि गैप छोड़ दिया कि याद आएगा तो लिखूंगा. वो याद कभी नहीं आता है. फ्रॉम माई एक्सपीरियंस वो याद नहीं आता है, राइट. जस्ट थिंक अबाउट अ पर्सन लाइक मी, इफ इट कैन स्किप माई माइंड, जिसने कि 50 बार तो लोगों के सामने बोल लिया होगा, 50 से ज़्यादा बार तो आप लोगों को बता दिया होगा, राइट. इफ आई कैन फॉरगेट अ नेम, सो यू कैन फॉरगेट, राइट. हाँ, एट टाइम्स इट कम्स बैक एट ईज, बट एट टाइम्स इट डजंट कम बैक. सो पेज में जगह मत छोड़ देना कि मेरे को याद आएगा. इतना ऑप्टिमिज्म अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आप अपनी वीकनेस दे रहे हो. आपने नहीं लिखा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा ना. एग्जामिनर एक एक वर्ड थोड़ा छान रहा है, छल नहीं लेके बैठा है कि नहीं ये वाला अटकेगा तो ही मैं इसको नंबर दूंगा. अंडरस्टूड व्हाट इज फील्ड वर्क ट्रेडिशन? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक फर्दर द टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन. वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द टूल्स. Interview we have done. We'll be talking about questionnaire. That is one of the most basic tool used by anthropologists. We'll be discussing questionnaire. So what is questionnaire? Questionnaire is a set of questions
sent to the respondents for their response. For their response. ठीक है? This is questionnaire. Set of questions. Okay. Questionnaire is one of the basic tool. Questionnaire is one of the basic tool used in anthropological research, the basic features of questionnaire. Number one, it consists of set of questions in a definite form and order. Definite form and order. Number two, the questionnaire contain a limited number of questions. Number three, the language used in the questionnaire should be understood by the respondents. Next, the questionnaire should be printed legibly if given in a form of a printout. If given in a form of a printout. Next, the researcher should be sensitive to the cultural values and norms while framing the questions. These are few features, or you can say preconditions also, that has to be looked into. Next is the type of questionnaires. Type of questionnaires. Number one, structured questionnaire. Number two, unstructured. And pictorial. Pictorial. Happy, not happy,
बिल्कुल नहीं हैप्पी, राइट। सो जिस तरह के आपने देखा होगा ना, कभी शॉपिंग करने जाते हो, दे आस्क यू प्लीज गिव फीडबैक, वो क्वेश्चनर होता है उनका, वो पिक्टोरियल क्वेश्चनर होता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर, पिक्टोरियल क्वेश्चनर। एक और भी हो सकता है, मिक्स्ड भी हो सकता है, बट 3 ठीक है, ठीक है। मिक्स्ड में मतलब कुछ क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड हैं, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड हैं। स्ट्रक्चर्ड क्या होता है? इन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर, in structured questionnaire, the questions are prepared in advanced, मतलब पहले प्रिपेयर करके जाऊंगा, यही पूछना है मुझे बस, उससे बाहर कुछ नहीं पूछना है, सब कुछ तैयार है पहले से। मेरा दिमाग बंद हो जाता है जब फील्ड पे जाऊंगा, मतलब सब कुछ प्रिपेयर्ड ही दे दिया स्टूडेंट्स को, ठीक है। आपको जो पूछा जा रहा है वो प्रिपेयर्ड क्वेश्चनर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। सेकंड इज अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। द क्वेश्चंस आर नॉट स्ट्रक्चर्ड इन advanced, in advance, not prepared in advance, and may be adjusted according to the needs of the situation. Pictorial, the respondent has to select appropriate picture from the given options राइट। नाउ कौन कौन यूज करता है, किस किस स्कॉलर ने यूज किया? सबसे पहले अगर हम देखें एंथ्रोपोलॉजी में, मॉर्गन यूज्ड क्वेश्चनर्स, आई बिलीव यू रिमेंबर, हमने बात किया था कि मॉर्गन ने हेल्प लिया था, भेजा था मिशंस के थ्रू, क्वेश्चनर के थ्रू डेटा कलेक्ट किया था, राइट। सो यू कैन से एग्जाम्पल लिख लो या केस स्टडी लिख लो। एल एच मॉर्गन was the earliest anthropologist to use questionnaire for collection of kinship data, okay. And naturally every anthropologist use questionnaire, every, whenever you are in the field also, then also you use questionnaire schedule के साथ questionnaire यूज कर लेते हो, तो यूज तो आप questionnaire करते ही हो, ठीक है। हर एक रिसर्चर questionnaire यूज करता ही करता है। So that is one of the basic tool of anthropological research. Merits, क्या मेरिट लगता है आपको? Yes dear, what are the merits? Quick, कैसे प्रोबिंग होगा? डीप तो हो ही नहीं सकता इसमें, ये तो लिमिटेशन है, डीप कैसे जाओगे? हाँ, एक तरह से प्रिलिमिनरी टूल हो सकता है, ये कह सकते हो, प्रिलिमिनरी टूल हो सकता है। भर के ही नहीं देगा ना कोई। रेस्पॉन्स रेट इज वेरी लो, वो तो डीमेरिट है। यस, तो वहां पे यूज ही नहीं हो सकता जहां पे अनएजुकेटेड सोसाइटी, वहां क्वेश्चनर की यूटिलिटी नहीं है, तो वो तो डीमेरिट आ गया ना क्वेश्चनर का। मेरिट बताओ, एडवांटेजेस क्या है? फास्ट है, मैंने अभी एक क्वेश्चनर बनाया 20 क्वेश्चंस का या 10 क्वेश्चंस का, एंड आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दैट
on the vast WhatsApp groups, Facebook groups, everywhere, right? तो कितने लोगों तक रीच हो जाएगी? लैक्स ऑफ लोगों तक मैं क्विकली पहुंच जाऊंगा 10 to 20 मिनट्स में. दैट इज व्हाट इट इज. सही से आपने स्ट्रक्चर किया है तो आप इजीली प्रोसेस कर सकते हो. सो इट इज टाइम एंड रिसोर्स इफेक्टिव. टाइम एंड रिसोर्स इफेक्टिव. Second, it can allow more coverage in a very short time. More coverage in a short time. Next, easy to administer. John, easy to administer. Next, these can be useful for cross-cultural analysis. Right. Next, these can be useful tool. Questionnaires can be useful tool in preliminary investigation. Useful tool in preliminary investigation. Next, disadvantages. हाँ हाँ easy to administer है. Next is हाँ limited applicability. Limited applicability. Limited applicability. Questionnaire इसी में ही हाँ कोलोन करके लिखो. Questionnaire cannot be used on most of the primitive tribes because they are illiterate. Next, the responses could be manipulated by the respondent. Next, low response rate. Next, information is not qualitative, especially in case of structured questionnaires. Right. Most of the next paragraph में लिखो most of the limitations of questionnaire method, here we are using the word method instead of tool or technique, है ना? That means we are using interchangeably. Most of the limitations of questionnaire method can be resolved by combining interview with questionnaire, that is schedule method.
schedule. Next topic, schedule. Schedule refers to the list of questions asked and filled by the interviewer, asked and filled by the interviewer slash researcher asked and filled by interviewer or researcher personally. Right? The schedule method combines questionnaire and interview together. Right. Preconditions for schedule or basic features of schedule. The questionnaire should contain limited number of questions. Second, questions should be sensitive to the native culture. They should be sensitive to the native culture. Next, the respondents' knowledge should be kept in mind while formulating questions. Right. Then the interview भी तो हो रहा है ना साथ में. हाँ, fourth point, the interviewer should have a prior rapport with the respondents. Right, for qualitative information. Right, schedules can be generally classified as observations schedule, document schedule, थर्ड रेटिंग schedule, रेट करना है 1 to 10, है ना. जब आपसे पूछते होंगे ना फ़ोन करके, आप हमारी सर्विसेज को 1 to 10 कितना रेट करना चाहते हैं, एंड यू सिंपली से 5 out of 5. That is what your general response is, right? Because you don't want to give a बुरा feedback to that person, right? That is a general response. ये आते रहते हैं ना, ये रेटिंग schedule ही होते हैं, right? फोन करके आपसे पूछा जा रहा है. If the researcher is not available, researcher will ask someone कि कॉल करके पूछो सभी से. Okay? Okay. Now, what are the merits and demerits? हाँ. Merits, demerits.
जो उसकी डीमेरिट थी वो इसकी मेरिट है जो, ठीक है. सो क्वालिटेटिव डेटा कैन बी कलेक्टेड. Second, schedule helps in building rapport. Helps in building rapport. Next, schedule is flexible method. Flexible method because midway course correction. Midway course correction can be done. राइट. अब मान लिया कि क्वेश्चन पूछते टाइम रिसर्चर को लगा ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर रिसर्च, सो नोट्स कैन बी टेकन अलोंग साइड. नेक्स्ट पॉइंट, रिसर्चर कैन टेक नोट्स alongside. Disadvantages or demerits. जो डिसएडवांटेजेस इंटरव्यू की थी वो इसकी भी है ना. इंटरव्यू टाइम एंड रिसोर्स कंज्यूमिंग है. टाइम एंड रिसोर्स कंज्यूमिंग बिकॉज हाउ मेनी इंटरव्यूज अ रिसर्चर कैन टेक. यूपीएससी बोर्ड कैन टेक ओनली 12 इंटरव्यूज इन अ डे, है ना. बट एक रिसर्चर एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं ले सकता है. एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक भी हो जाए वो काफी अच्छा है, एक भी नहीं हो पाता है ना. पहले तो मिलेगा, प्यार से बातें करेगा, खाना वाना खिलाएगा, राइट. खाने के साथ कुछ और पिलाएगा उसको ताकि वो बात करने की लेवल पे आए कि बताना शुरू करे, राइट. तब जाके बातें होंगी. ओके, देन इट रिक्वायर skilled human resource. Skilled human resource. Next, it may involve element of subjectivity. Next, responses could be artificial. Responses could be artificial क्योंकि आप जो पूछ रहे हो सामने वाला आपको पसंद ना करे, whatever you are asking, right. Then questions, sensitive questions may end the session suddenly. आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा बस हो गया भाई चलो, है ना, अब मैं नहीं बात करता तुझसे, तुम गंदे इंसान हो, है ना, ऐसा हो सकता है. ओके, सो वो मेरिट हो जाएगा. अगर वो समझ नहीं पा रहा क्वेश्चनर को तो रिसर्चर समझा देगा तो मेरिट में आएगा ना. अगर समझ नहीं पाएगा, इलिटरेट के ऊपर क्वेश्चनर यूज नहीं हो सकता, स्केड्यूल तो हो सकता है ना, इजंट इट. एक्सप्रेस, अच्छा ये आप कह रहे हो कि एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. एक्सप्रेस ना कर पाना इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि लैंग्वेज समझना एक अलग चीज हो जाएगा, राइट. बट इंटरव्यूअर जो इसीलिए अगर स्किल्ड है वो तो वो समझा देगा ना उसको, और उससे एक्सट्रैक्ट भी करना जानेगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज केस स्टडी मेथड. हाँ, किसने यूज किया होगा स्केड्यूल? सभी ने यूज किया होगा. ठीक है. इंटरव्यू और केस इसके लिए, डू यू रिमेंबर दिस बुक? कुंग विमन. हु रोट दैट? मार्जोरी शोस्ताक. So this is based on the interviews of Nisha, interviews and schedules of Nisha. Nisha नाम है उसका, उस लेडी का नाम है जिसके ऊपर ये बुक लिखी गई है. ठीक है. सो दोनों जगह पे मार्जोरी शोस्ताक जा सकता है.
ठीक है, और कोई भी यूज करता है, एवरीवन यूज स्केड्यूल एंड क्वेश्चनेयर्स, राइट। इंटरव्यू सभी यूज करते हैं, सभी के सभी इंटरव्यू करके आते हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड इज योर केस स्टडी मेथड। हाँ, स्केड्यूल और इंटरव्यू दोनों में चलेगा ये। केस स्टडी, केस स्टडी is a very important qualitative method of research case study involve an in-depth study of a case, केस को कॉमा में कर लेना, इन्वर्टेड कॉमा में, in depth study of a case. Case can be, full stop करके लिखो, case can be a particular event, incident, phenomena, or a social unit, where a group of people are directly or indirectly involved or affected. Right? Full stop. Next paragraph में लिखो, Herbert Spencer was the earliest scholar to use case study in his ethnographic work. Later on, it was used by anthropologists like Malinowski, ब्रैकेट में लिखो ट्रोब्रिएंडर, कुला लिख दो, ट्रोब्रिएंडर डेस कुला की केस स्टडी है उनकी पूरी, राइट। पूरा एक इवेंट को स्टडी कर दिया इन्होंने, राइट। देन मार्गरेट मीड, the adolescent behavior of Samoans, Clifford Geertz, cockfight among Balinese, You may also use, say, Turner का मुकुंडा की केस स्टडी है ना, विक्टर टर्नर, मुकुंडा among Dembu, You may use Chisungu by Audrey Richards, Bemba, Chisungu, अभी लिखा था ना चिसुंगू, so कितना भी कर सकते हो, everyone is doing the case study. I believe आपको क्लैरिटी आ गई केस स्टडी से हम मतलब क्या है।
एक ट्राइब में गए, वहां पे कोई एक पर्टिकुलर केस को स्टडी कर लिया, उस ग्रुप जिसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व था. इज इट क्लियर? ओके. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ केस स्टडी? Number one, it is a holistic method. Holistic method that enables us to get an all-round perspective on a single incident or event. Second, it is a qualitative method next. It can be used to study the past information associated with that event. Right? You can say case history or past history of that event. Right? Now, what are the you can say various sources of case study? Sources of case study. Various sources of case study involve. Number one, life history. Life history. Number two, personal documents, letters, records. Letters, records, ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जैसे कि गीट्स ने किया, बाकियों ने किया, इंटरव्यूज एटसेट्रा. समझ में आ गया ना? जैसे मान लिया कि केस स्टडी किसकी हो सकती है, दिल्ली में राइट्स हुए थे, उसकी भी केस स्टडी हो सकती है. तो क्या करेंगे, रिसर्चर क्या करेगा, उस इवेंट में जितने लोग एसोसिएटेड थे उनके साथ क्या किया जाएगा, उनके कंप्यूटर्स भी देखे जाएंगे. Isn't it? वो क्या बुक पढ़ते हैं वो भी देखा जाएगा. Isn't it? उनकी लाइफ हिस्ट्री चेक किया जाएगा कि पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड कितने हैं इनके. राइट? Isn't it? सो केस हिस्ट्री में सब कुछ ऐसा देखा जाएगा. ओके, इवेंट कैसे कैसे प्रोसीड हुआ वो भी देखा जाएगा. मेरिट्स ऑफ केस स्टडी. नंबर वन, case study helps to probe the in-depth analysis of a social unit. Second, it is suitable for data collection pertaining to sensitive areas of a social phenomena.
Next, case study helps in formulation of hypotheses and also provide clues for further research. Next, demerits. Merit और भी हो सकती है, like qualitative data, 360 degree approach, all these, right? Holistic approach और ये सब. Demerits. Number one, records could be open to error, due to faulty case selection, or inaccurate observation. Second, there is no uniform and standardized system for recording case history. Next, कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि सभी लोग एक ही स्टैंडर्ड यूज करें. आप अपने हिसाब से स्टडी करो, मैं अपने हिसाब से स्टडी करता हूं. दैट इज हाउ. सो अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? Isn't it? How will you develop then you can say cross cultural generalizations? क्योंकि आपने केस स्टडी अपने हिसाब से स्टडी किया, मैंने अपने से स्टडी किया. So we are not agreeing on many things. How will we make generalizations? Isn't it? Next point. The investigator's bias मतलब researcher's bias might distort the case study. Next, it is time and resource consuming. Next, it is difficult to draw generalizations. Just on the basis of few cases. Next is life history. Next is life history. Next topic is life history. Okay, life history तो life की history, एक इंसान की life की history, that is what, but उसमें 10 मार्कर आ सकता है, तो उस हिसाब से लिखना है, लिखो. लाइफ हिस्ट्री किसने यूज किया था, मैं आपसे पूछूंगा ये. ओके, व्हाट एल्स? ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन? स्टडी ऑफ इशी. Okay, very good. What else? अलोर पे भी लिया था कुछ लाइफ हिस्ट्रीज वगैरह. अलोर पे किया था ना. ठीक है, वेरी गुड. 2-3 हो जाएगा, बहुत है अपने पास. सो डू राइट. लाइफ हिस्ट्री is
A method of data collection used by anthropologists and sociologists life history is an extensive account of a person's life, whether written whether written or narrated whether written or narrated by the person or by others or by both. ठीक है, वो मूवी देखी थी संजू, सो उसमें वो सभी से पूछ रही होती है ना कि क्या जानते हो संजू के बारे में, राइट? सो संजू से भी पूछ रही होती है और बाकियों से भी पूछ रही होती है. हैव यू सीन दैट मूवी? वेरी गुड, देखना कभी समय मिलेगा तो, राइट? बट मूवीज portray the human behavior in an effective manner. Next time I will be using some South movie, right? Okay. So you understand what is life history? Okay. Life history as a research tool has been used by various anthropologists such as yes dear, एक नाम बताओ जिसने लाइफ हिस्ट्री यूज किया हो. थियोडोर क्रोबर ऑफ ईशी. थियोडोर क्रोबर ऑफ ईशी, द लास्ट याही, कोमा. नेक्स्ट बताओ. यस डियर. कोरा डू बॉयस on her study of Alor people. कोई तो देखो ऊपर. Yes dear. No one is looking. Yes dear. Mead किसका? किसका? लाइफ हिस्ट्री किया होगा, किया ही होगा, है ना? इतना सारा काम. लाइफ हिस्ट्री वो तो ग्रुप को स्टडी कर रही है. लाइफ हिस्ट्री इज अबाउट एन इंडिविजुअल. ओके, एनीवन एल्स? जस्ट नाउ आई टोल्ड यू इन टुडेज क्लास, निशा. निशा की लाइफ हिस्ट्री तो थी ना, मार्जोरी शोस्टक. निशा की लाइफ हिस्ट्री तो थी वो. ओके, नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लाइफ हिस्ट्री? Number one, the life history is a method to represent the characteristics of a group and their way of life the life history of a person
person to be taken in account, depends on that person's contribution, as a member of that community. Right? मतलब the person may not be a very reputed person, क्योंकि reputed person common traits नहीं रखेगा. Right? Next, life history provide a detailed account of the behavioral practices of the group, क्योंकि इंडिविजुअल कॉमन है तो हम जनरलाइज कर सकते हैं. मेरिट्स ऑफ लाइफ हिस्ट्री, झूठ बोल जाए, है ना, एक्जेजरेट कर रहा है, बिल्कुल. डू राइट. लाइफ हिस्ट्री अलाउज इन डेप्थ स्टडी Second, life history allows collection of qualitative data, life history allows the study of cultural context, Okay, what are the demerits of life history study? Time and resource consuming, Second, basically you can say the narrator may exaggerate about the past events. Second, what if the person chosen is not representative of the group? What, right? So अगर मान लिया कोई भी इंसान आपने चूज किया है, कैसे चूज करते हो? अगर आप फील्ड में जा रहे हो तो आप नॉर्मली ये देखते हो कि आपके पास कौन आ रहा है जो आपसे खुल के बात करने को तैयार हो, राइट? उसी के बारे में आप थोड़ी देर में क्या लगेगा, यही बेस्ट है, बिकॉज एटलीस्ट मुझसे बात कर रहा है. Other people are not interested even in talking to me, right? So what's the meaning? I will waste, at least 30-40 hours, बहुत सारा टाइम लगा दूंगा, फायदा क्या होगा मुझे, isn't it? Recently I visited this site of Rakhi Gadi last year. So when I went there, एक बाबा बीड़ी पीते पीते पहुंच गए मेरे पास and then he started telling everything कि वसंत सिंधे साहब आए थे इस बार, ये हुआ वो हुआ, मैंने उनसे इतनी देर बात किया, मैंने ये सीखा, एंड वो मेरे साथ पूरे 2 घंटे रहा, राइट? आई डोंट नो व्हाट ही वाज इंटरेस्टेड इन, बट वो पूरे 2 घंटे मेरे साथ रहा एंड ही टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट दैट विलेज एंड द साइट, right? In the end, I could not understand what he demands from me, right? What he want from me. So I asked the people in and around जो कि वहाँ के local थे कि कुछ देना है क्या बाबा को, इसलिए कहीं पता लगे इसीलिए time दे रहा हूँ मुझे. So I wasn't aware, but there are people. He was not interested in money. I later on came to realize that he's not interested in money. He's basically an outspoken person जो कि सबसे घुलना मिलना जानते हैं.
उनको अच्छा लगता है लोगों से बात करना, राइट? सो that kind of person, if I have to be in the field, naturally whose life history I will be, getting most easily, है ना? जो सबसे पहले आके आपसे बात करा उसी के बारे में लिखोगे. So that is what happens with the researchers also, right? So हाँ, और कोई उससे बात ना करता हो तो आ जाओ, तुम ही आ जाओ, है ना? और कोई मुझसे बात नहीं करता है, मेरी बीड़ी वेस्ट हो जाती है, बट हियर आई विल यूटिलाइज इट, राइट? ओके, बिकॉज दे मस्ट एंजॉय इट एंड समवन विल स्मेल ऑल्सो इट दिस, राइट? नहीं तो उनको मजा नहीं आता है. ओके, बट ओके, नेक्स्ट, द पर्सन chosen for life history, the person chosen for life history may not be representative of the group. Next, इसी को ही उल्टा करके लिख लो. We cannot generalize individual life histories Okay, next is genealogy. Genealogy is the family history, right? Genealogy genealogy refers to the systematic construction of pedigree, systematic construction of pedigree or family tree using internationally accepted symbols and letters. Genealogy represents the family history. Genealogy represents the family history. Genealogy involves study of one's ancestors, next paragraph. The genealogical method was originally developed by W.H.R. Rivers. W.H.R. Rivers while doing research during Torres Strait expedition. Later on, he used this method on the study of todas, The genealogical method was used by most of the researchers who worked on kinship,
kinship, right. Now, what are the main features of genealogy? Number one, genealogy represents the family history. Second, it helps in tracing the line of descent, helps in tracing the line of descent. Second, it helps in connecting past to the present, connecting past to the present. Next, genealogical studies can unveil myths and beliefs associated with ancestors and ancestor worship. Right. It can be useful in analysis of social organization. Analysis of social organization. Right. Tools used in genealogical method. In-depth interviews. Second, study of oral history, life histories, oral history. Next is life histories, right? Study of social organization. Next, study of social organization. That means status, role, etc., etc. Application and merits. Next is application and merits. Number one, useful in study of social organization, kinship, etc. Can be useful in the study of migration, migration. Migration. Next, can be useful in understanding of the social structure, type of institutions, or network of relationships, among the individuals. What are the limitations of this method? What are the limitations of this method?
How many ancestors you people know? 4 generations? 4 generations, ना? Not beyond 4 generation? 5 generation वाला कौन था? Vijender, you were there. 5 generations. Maximum is the 5 generation? Anyone beyond this? No? हाँ तो आप तो रिटर्न लिटरेट सोसाइटी के पार्ट है ना. आपका जितने भी आप लोग, इफ यू आर अ फॉलोअर ऑफ हिंदू religion, then in Haridwar or at any place wherever there is Asthi Visarjan is done, so you can have a complete record of your ancestors to many generations, right? Maybe before that, if records are not available, maybe you have migrated at that place at that time only, right? So काफ़ी generations तक आपको मिल जाएगा वहाँ पे, so वो आपकी लाइफ हिस्ट्री है, राइट? बट उससे पहले की रिकॉर्ड नहीं है, पहली बात, ठीक है? सेकंड, वो तो आप एक लिटरेट सोसाइटी के पार्ट है जहाँ पे नहीं लिखा जा रहा है वहाँ पे यू हैव नो रिकॉर्ड्स, आपके पास नहीं है रिकॉर्ड, है क्या? सो डू राइट, अगर नहीं है तो वही लिमिटेड हो जाएगा, लिमिटेशन है. नंबर 1, दी non-literate societies may not be able to provide information about their ancestors beyond 4 or 5 generations. What else? What are the other limitations? What if you can say we are laughing? बोलो, कुछ कह रहे थे? हाँ, that's good. So how come that comes to your mind? That's funny and that's also legitimate. Adoption हो रहा है तो क्या ठीक बात है. What else? Tell me other things. I will incorporate all of them. What else? Genealogy की और limitation क्या हो सकती है? Now, the family tree. Suppose I am studying your family tree. So in your family tree, women's side is missing. Right? If I have to study the family tree of your family completely, then I have to go to the family side of the women's that are married to the other families because they belong to that lineage now, isn't it? So it requires participation of multiple families, right? And some may not be cooperative, right? So do right. Genealogical account basically provide the details about descent, the members who do not belong to the descent group, are generally excluded from the family tree. Right? Then
अगर कोई फैमिलीज अपरूटेड है अपनी जगह से, तो उनका फैमिली ट्री मिलना वैसे मुश्किल है, राइट। माइग्रेटेड पीपल का अगर कोई रिसेंटली अपरूटेड है 2-3 जनरेशन से ही, तो इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस बैक देयर रूट्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, genealogy may not be applicable on uprooted families राइट, बट जीनियोलॉजी को हम आइसोलेशन में देख ही क्यों रहे हैं? इट इज नॉट, नो टूल इज यूज्ड इन आइसोलेशन, राइट। सो इन एसोसिएशन विद अदर टूल्स इट कैन बी मीनिंगफुल। हम जीनियोलॉजी अकेला क्यों देख रहे हैं? जीनियोलॉजी alone will not be sufficient because we are doing observation there, we are taking interviews, we are studying their oral history, we are studying, sometime we are doing case study also, so we can employ the combination of methods, right? So do right further. Next method, conclusion, combination of methods use करेंगे. We cannot use genealogy or any other method in isolation, right? We will employ these methods in combination. Next method is oral history. Oral history is a method of conducting historical research for non-literate societies. The non-literate societies do not have written history full stop. Their history may be handed down through folk tales, folk songs, mythical stories, etc. Okay. Now, if you remember, I might have told you that Malinowski studied Trobriandus, and Trobriandus have a myth that is handed down from generation to the generation, that all Trobriandus were used to live in the underground. 4 pair of brothers and sisters came to the surface. So that is basically part of their oral history. It is not documented anywhere. Similarly, almost every cultural group have such kind of oral history, right? हमारी भी है oral history कुछ ना कुछ तो, ठीक है, वो वेद पुराण में लिखी हुई है, बट राइट, बट वो पहले तो जब श्रुति था तो सुन सुन के चल रहा था. श्रुति का मतलब सुन सुन के चल रहा था, हैंडेड डाउन हो रहा था, राइट. तो श्रुति वाज द ओरल हिस्ट्री, है ना. सो डू राइट द Trobriandus oral history about their origin myth, was documented by Malinowski,
full stop. Similarly, many other anthropologists used oral history as a qualitative tool of data collection, such as Evans Pritchard on Newer Ajande, Newer N-U-E-R Ajande, Raymond Firth on TIV, etc. राइट, समझ में आया? इवन फ्रांस बोवास ने भी स्टडी किया था उनकी ओरल हिस्ट्री को, एस्किमोज की ओरल हिस्ट्री, राइट? तभी तो डिफ्यूजन को कैसे स्टडी किया होगा? हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म आप पॉसिबल ही नहीं है अगर उनकी ओरल हिस्ट्री नहीं स्टडी किया आपने तो. हाउ कैन यू से दैट दिस ट्रेट केम फ्रॉम समवेयर एल्स? दोज पीपल हैव नो रिटन अकाउंट्स, राइट? How can you say that the traits are handed down from one generation to the next generation? So Franz Boas you may use, right, on Eskimos, Kwakuital, etc. Right? Now, characteristics, features of oral history. Number one, it is a primary source of data collection, primary source of data. Second, oral history is a spoken account, or you can say a narrated account of history. Next, oral history is a method of recording and preserving the testimony right. Oral history documentation involve in-depth interview, right? In-depth interview. Merits क्या हो सकती है? Oral history provide historical account of a culture where written history is not available. Second, it is a qualitative source. Next, a researcher can understand history in cultural context. Next, cultural context. The researcher may be able to connect past to the present conditions. Right. Limitations.
people and cultures people and cultures have a tendency to glorify history. People and cultures have a tendency to glorify history. I believe you know that Beam have 52 elephants power. सो था, ठीक है, मेरा कम हो गया, माय बैड. सो था, 100 हाथियों का बल था भीम में, राइट. सो वी हैव अ टेंडेंसी, ऐसा बोला जाता है ना कि 100 किलो की तलवार उठाते थे महाराणा प्रताप, टीपू सुल्तान. तो 100 किलो की अगर एक उठा के ऐसा, हैव यू सीन एनीवन लिफ्टिंग 100 केजी, राइट. इतना बड़ा आर्म था उनका, राइट. 750 किलो ऑन बॉडी, हाउ कैन ए पर्सन वॉक इवन 750 किलो, राइट. 750 किलो रखने के बाद वो वहीं गिर जाएगा, ठीक है. वो जो एडी होल जो किसी ने बताया था, आई थिंक 500 की जो किलो में से तो बोला भी नहीं जा रहा, राइट. ही लिफ्टेड 500 किलो, राइट. मैं भी चलो हम मान लेते हैं 500 किलो एक बार ही उठाया, लेकिन उसने, है ना, उसके बाद छोड़ दिया है सेकंड्स के बाद. बट जस्ट थिंक अबाउट 750 किलो ऑन दी बॉडी एंड वॉकिंग एंड फाइटिंग, सिटिंग ऑन दी हॉर्स. हॉर्स का क्या होगा बेचारे का? Oh, you are here. Dalton is in the way, so you are not in my direct eyesight. Okay, okay. तभी मैं सोचूं, where were you? Okay, all well. Okay. History. Every culture have a tendency to glorify their history because it's a narrated account, ना. जो फोक टेल्स में क्या होगा, फोक सॉन्ग्स में क्या होगा, वही यही होगा. हाँ. हाँ, तो दैट इज व्हाट इट इज ना. यू जस्ट टॉक टू योर ग्रैंड मदर, शी विल टेल यू दैट पहले के जमाने में ऐसे घी पी जाया करते थे, ऐसा हो जाया करता था, right. So that is a common thing, so that means we are glamorizing, we are glorifying our historical past, right. No, हाँ हाँ पी जाते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही हो जाता था ना, मतलब इट्स नॉट अ जनरल थिंग ना. Right. Okay. Next limitation. What are the other limitations? Yes, dear. What are the other limitations? Yes. History is a subjective account. Yes. Do right. History is a subjective account. What else? Now, chronological एविडेंस है क्या हमारे पास टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री, राइट. डू राइट. समटाइम्स a complete chronological picture may not be established all well. You seems like you are about to cry. Okay. Okay. हाँ, ठीक है. So नींद आ रही है तो ठीक है, 9 o'clock हो गया. We'll take from here tomorrow. Okay. And we have a test on Saturday for rest of the theories. Sunday? नहीं, अब एवरी सैटरडे या संडे टेस्ट होगा. विदाउट फेल यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि टेस्ट होगा. आप मुझसे पूछ लो या मैं आपको बता दूं. मैं बताऊंगा तो फ्राइडे के आसपास बताऊंगा, आप मुझसे पूछोगे तो जल्दी बता दूंगा कि कौन सा कोर्स. टेस्ट लेकिन हर वीक होगा, ठीक है. टेस्ट विल बी देयर. जो 2 दिन की छुट्टी मिल रहा है, अब 1 दिन की छुट्टी हुआ करेगा, 1 दिन टेस्ट हुआ करेगा.
सैटरडे संडे जो छुट्टी होता है ना, वो एक दिन टेस्ट के लिए है। हाँ दिस वीक ओनली, दिस वीक ओनली, ओके चलो दिस वीक ओनली। हाँ लॉस ऑफ डेटा, हाँ अनडाउटेबली, तभी तो हम कह रहे हैं ना प्रॉपर क्रोनोलॉजी एस्टेब्लिश नहीं होगा तो बीच बीच में लॉस डेटा मिसिंग हो सकता है, वही बात है जो आपने बोला। ओके थैंक यू।